we take the example interest on reducing balance. So Mr. Desai takes 15 lakhs period is 20 years and 7.5% reducing balance. Okay, so every month the EMI consists of principal and interest component. So the principal component is deducted from Mr. Desai's outstanding loan amount and interest is charged on lesser outstanding principal. So principal component. How to deduct this principal component? From Mr. Desai's outstanding loan count component, that and interest is charged on lesser outstanding principal. ओके, म्हणजे 15 lakhs मधनं फर्स्ट मंथ मध्ये EMI देऊन मायनस जे पैसे ओके त्याच्यावर इंटरेस्ट काउंट केला जातो. सो फॉर रिमेनिंग मंथ्स द इक्वेशन between interest and principal keeps changing every month. Since interest is calculated on the outstanding principal, a higher share goes towards interest during the initial part of the term. So composition of interest and principal of first stream is shown below. So here first month there is a 15,000 loan, correct? EMI is 12,090, interest is 9,375 and principal is 2,715. Okay, so in second month if we observe this loan amount become less. Okay, first one is a 15 lakhs and next one is a 14 lakhs 97,285. Okay, so on this second month this one is an outstanding 15,000 is an outstanding 15 lakhs is a principal component and outstanding is amount is an 14,097 285, correct? So and on this we count the interest, okay, like that. So how this EMI calculated? So there is a formula. हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. P is equal to x upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. So here P is an principal, R is rate of interest per year. Okay, and how to convert this R into I? I means rate per rupee per month. Okay, so which is a R upon 1,200. So this one 1,200 R upon 1,200. So next one using the formula put the value here. P is equal to 15 lakhs, correct? So our task is find the x. X is an EMI here. Okay. So next one x upon R. R is an 7.5% and divided by 1,200. Okay. Next one 1 minus 1 plus and here I is equal to which is an R upon 1,200. Okay. Raised to minus n. So here how much there is a 20 years and convert this 20 years into month. So 20 into 12, in 1 year there are 12 months. 20 into 12 is equal to 240. So
here put the values all the here and do the calculation. So 1200 divided by 77.5 is equal to 160. X into 1 remove this bracket, 1 minus 1 minus 7.5 upon 1200 raised to minus 240. So it become 1 minus 1.00625 raised to minus 240. इथे लक्षात घ्या हे minus n आहे. So we get a answer x is equal to 12090. So this one is a calculation of this AMI. So use the formula. For this, it's clear that for calculation of your EMI, usual formula for annuity are to be employed. So annuity ची concept आपण last lecture मध्येच learn केली. Okay. So next one. This one is interest rate on interest on reducing balance. आता लक्षात घ्या इथे बॅलन्स रिड्यूस होतोय. दॅट मीन्स जे आपल्याला इंटरेस्ट आणि जे लोनचे अमाऊंट आपल्याला रिपेमेंट इन्स्टॉलमेंट करावी लागणार आहे ऑब्विसली त्या कमी कमी होत जाणार आहे. आणि फ्लॅट इंटरेस्ट रेट आता ह्याच्यात काय होतं इन दिस मेथड द लँडिंग एजन्सी बँक हाऊसिंग फायनान्स कंपनीज कॅल्क्युलेट द अमाऊंट प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द गिव्हन टर्म at a specified rate of interest. Okay. Then the EMI is arrived by dividing this amount by the total number of months in the term. म्हणजे प्रिन्सिपल म्हणजे तुमचे 15 लाख वरती 1 इयर किंवा आता 20 इयर दिले 20 इयर्स ला किती इंटरेस्ट पडेल आणि त्याला डिवायडेड बाय interest padel principal plus interest and then the EMI is arrived by dividing this amount by total number of months in a term. So the here EMI is equal to principal plus interest divided by the total number of months in the term. So first calculate the amount by using the formula A is equal to P plus P into 1 plus R into N divided by 100. आता लक्षात यस EMI म्हणजे काय मॅम हिंदीत सांगा ना. ओके सपोज आपने एक बैंक से लोन लिया है. ओके आपने बैंक से लोन लिया है और सपोज आपको एक कार परचेज करनी है उसकी वैल्यू है सपोज 10 लाख बट आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप डायरेक्टली 10 लाख कार के शोरूम को दे दो और डायरेक्टली कार घर ले आओ which is not possible because no one has an amount of money. It's a 10 lakhs which is a big amount. Correct? So for this we take a loan from any bank. Suppose 10 lakh rupees car and I have 1 lakh. So I will pay 1 lakh to a car showroom and for 9 lakhs I will take a loan from the bank. Okay. But we will take a loan. Why? Because हमने लोन क्यों लिया है? Because हमारे पास इतने पैसे नहीं है 10 लाख डायरेक्टली पे करने के लिए. ओके सो हमने 9 लाख का लोन लिया बैंक से 1 लाख का जो है वो 1 लाख का हमने पेमेंट कर दिया कैश और आपने जैसे भी जो भी मोड रहेगा उसमें तो और आप कार घर ले आए. ओके सो हाउ टू
पे दिस 9 लाख जो रुपीज है वो आप बैंक को कैसे पे करोगे? ओके, अगर बैंक आपको लोन दे रही है तो वो आपसे कुछ तो परसेंट इंटरेस्ट लेगी। ओके, बट आप ये 9 लाख ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपके पास है नहीं तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे, उसे डिवाइड करोगे इन इक्वल पार्ट। आप डिसाइड करोगे आप आपकी अर्निंग कितनी है उसके ऊपर आप कैसे ये सारे पैसे बैंक को चुका देंगे। सपोज मैंने ऐसा बता दिया कि ठीक है 9 लाख है तो मैं 5 इयर्स में बैंक को दे दूंगा विथ इंटरेस्ट। बैंक ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए बोलेगी। ओके, सो जो 9 लाख के अमाउंट है आप 20 इयर्स में सॉरी आप 5 इयर्स में सॉरी आप 5 इयर्स में पे कर रहे हो बैंक को विथ इंटरेस्ट। यस, पर उसके 9 लाख के स्मॉल स्मॉल पार्ट होंगे मंथली डिवाइड, जो आप मंथली पे करोगे बैंक को इट्स कॉल्ड एज EMI। ओके, ओके मैम। हाँ, दिस वन इज एन मंथली इंस्टॉलमेंट। 9 लाख के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो आपको मंथली पे करने पड़ेंगे। तो वो पे करने का तरीका हर एक बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है, हर बैंक का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। SBI का अलग, अगर आप फ्लैट ले रहे घर ले रहे उस पर इंटरेस्ट अलग रहता है। सो ईच एंड एवरी बैंक टू बैंक इंटरेस्ट डिफर होता है। ओके, ऑन दिस इंटरेस्ट एंड आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने 9 लाख का कर्जा लिया है वो उस पर आपको EMI मंथली पे करना पड़ेगा बैंक। ओके, ऐसे करके आप 9 लाख बैंक के चुका सकते इजीली। सो इट्स कॉल्ड एज अ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इसमें क्या होता है, देयर आर टू वेज टू आपके बैंक को पैसे लौटाने के दो वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो उस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है और आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन फ्लैट इंटरेस्ट रेट में ऐसा नहीं होता। फ्लैट इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट जो काउंट किया जाता है वो प्रिंसिपल पे कायम रहता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। पर यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट वन पहले में इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस में बैलेंस रिड्यूस होता है और उस पे इंटरेस्ट लगता है। ओके, जैसे बैलेंस रिड्यूस होगा तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो ऑब्वियसली कम आएगा। बट आपका जो 9 लाख है 9 लाख पर ही आपने कर्जा लिया है उस पे इंटरेस्ट 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 लगाते जाएंगे तो पैसे कम इतने जल्दी कम नहीं होंगे। ओके, सो वे फ्लैट इंटरेस्ट रेट वी आर हियर। ओके, सो ये फॉर्मूला यह है, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू N अपॉन 100। ये जो है हमने कहा यूज किया था अमाउंट का ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली आपके जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। ओके, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तब ये फॉर्मूला बदल जाता है। ओके, सो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेस टू N डिवाइडेड बाय 100। ओके, दिस फॉर्मूला इज हियर, sorry, 1 plus R divided by 100 raised to N, okay, which is a formula in a compound interest. So here this one is an amount, and how to find EMI? Amount divided by number of months. Suppose we take 5 years मध्ये जर तुम्ही 5 years साठी लोन घेतलं असेल, आपने लिया है तो 5 into 12. Okay, this is the calculation here. So here this same example is here but in different way. P is equal to 1 lakh, everyone knows. R is equal to 5% rate of interest, and N is equal to 20, and number of month is in 240. हे मागचं जे example आहे Mr. Desai take a loan 15 lakhs and over a period of 20 years and 7.5% balance, reducing balance interest rate असेल. So
This formula is used here. No, this example is not here. Sorry. Calculate EMI for 1 lakh at 5% flat over 20 years. So P is equal to 1 lakh, R is equal to 5 and N is equal to 20. So and K is number of months. So 20 ला तुम्हाला मंथ मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. So amount is equal to P into 1 plus R into N divided by 100. Put this value, we get the amount is 2 lakh. Okay, so it will be double in 20 years using 5% rate of interest. So EMI is equal to A amount divided by 240. So 2 lakh divided by 240 and is equal to rupees 833.33. Okay, this one is an EMI using the flat interest. So how to here comparison between flat interest rate and rate of interest on reducing balance. So if we observe, we easily get that rate of interest on reducing balance is an good way to repay the EMI. Okay, to pay EMI. So here there is an example. Let the loan of P rupees 1 lakh on a flat interest 5%. Okay, and let the term is 20 years. Then EMI turns is into 833.33. वरचं एक्झाम्पल जसं होतं तसंच आहे. ओके, तेच एक्झाम्पल आहे. सो आता हे कसलं झालं, फ्लॅट इंटरेस्ट रेटवर आपण काढलेलं आहे, करेक्ट ना. पण हेच आपण जर इंटरेस्ट ऑन रिड्युसिंग बॅलन्सवर काढायचा प्रयत्न केला तर we get a formula P is equal to X upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus N. So here P is in 1 lakh, correct, is equal to X and 5% is an rate of interest. त्याला मध्ये पर मंथ पर रुपी मध्ये कन्वर्ट करायचंय. So here 5 divided by 1200 I is equal to, after putting these values we get answer is X is equal to 660. Okay, 660. So if we observe this amount, फ्लॅट इंटरेस्ट रेट वर किती अमाऊंट येते EMI ची 833.33 आणि जर तुम्ही इंटरेस्ट ऑन रिड्युसिंग बॅलन्स वर केलं तर EMI किती होतोय 660. ओके, 660 रुपीज. So this comparison, so which EMI is better, which way is better to pay EMI, we easily get over it by our loan. Yes, which is a beneficial. Yes, anyone? Second one. Which is a flat interest. Reducing flat interest. Yes, correct. Interest on reducing balance. But आता इथे एक कंडीशन, यह एक कंडीशन भी है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए. ओके, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा दोनों में भी तो ही आपका बेनिफिशियल कौन सा होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस. इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग ऑन बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. ओके, so most of the flat interest rate and rate of reducing balance, people prefer reducing balance scheme, and nowadays a flat interest scheme is rarely used. So आता कोणती चालू आहे फ्लॅट इंटरेस्ट रेट, सॉरी कोणती वे चालू आहे आता, रेट ऑफ रिड्युसिंग बॅलन्स. ओके, so this one is a concept of EMI.
So there is an example. First one is an a two-wheeler manufacturing company sells a motorcycle costing rupees 44,000 on installment basis. Okay, costing is an 44,000. That means principal P is equal to 44,000 and charging EMI rupees 4,500 for 1 year. Find flat rate of interest. So our task is find R here. So flat of rate of interest साठी कोणता फॉर्म्युला आपण यूज केला होता? A is equal to P into 1 plus Rn upon divided by upon 100. Okay. So here principal is 44,000. Okay. Motorcycle costing आहे and installment basis वर ते शोरूम तुम्हाला देते EMI एका इयर साठी इज अँड 4,500. तर each and every month टोटल करून किती होईल? 4,500 into 12 is 5,000. It's in 54,000. Okay, like that. And P is equal to 44,000. Find R. And here N is equal to 1 year. So put the values. A is equal to 54,000 is equal to P is equal to 44,000 and 1 plus R into N is equal to 1 divided by 100. So it becomes 54,000 divided by 44,000 is equal to 54 divided by 44 is equal to 1 plus R divided by 100. So do the calculation and we get the answer is 1000 divided by 44 is equal to 22.7. So rate of interest is 2.7%. Flat rate of interest. Okay. So this one is a simple example. Next one is an a person borrows rupees 5 lakh from HDFC for purchase of the flat at 8% per annum on reducing balance interest rate. Okay, reducing balance interest rate. Find the EMI for a period of 10 years. Calculate corresponding flat of rate of interest. So here 5 lakh is in principal. Okay. Flat at 8% per annum. So here R is equal to 8%. But I is equal to 8 divided by 1200. Okay. हे आपण फॉर्म्युला मध्ये लास्ट टाइम मध्ये पाहिलं. Okay. Here R divided by 1200. So here I is equal to 8 divided by 1200. Next one formula is P is equal to X divided by I into 1 minus in a bracket 1 plus I raised to minus N. Correct? So here put the values. P 5 lakhs is equal to X divided by 8 divided by 1200 into 1 minus 1 plus I is equal to 8 upon 1200 raised to minus 120. Minus N is there, correct? So N is a number of months. So there are 10 years. 10 into 12 is in 120. Okay. So 5,000 into this 8 into 1,200 is equal to X
into 1 minus. So 1200 into 1 plus 8. It becomes 1208 divided by 1200. It becomes 0.4503 and raised to minus 110 to 20 पण directly काढलाय. So it become 0.4503. Do this calculation on a scientific calculator. तुम्हाला एक्झामला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर अलाउड असतो. ओके, सो here x is equal to 6064. Okay, this one is an EMI. म्हणजे हा मंथली EMI तो किती देणार 6064 ऑन 5 lakh and 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. पण पूर्ण 10 years मध्ये how much money he pay? So the total amount paid by the person not in 10 years, in only 1 year. So it become amount is equal to 6064 is equal to 120 and it become 727680. Okay, हे झालं EMI. Okay, find the EMI on the reducing balance interest rate. Same thing, calculate corresponding flat of interest. हे अमाउंट आपण कशासाठी काढली फ्लॅट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करण्यासाठी. सो A is equal to P into 1 plus R into N divided by 100. So amount is equal to 727680 is equal to P is in 5 lakh into 1 plus rate of interest find करायचा आहे, correct, and N is equal to 10. So divided by 100. So 1.4554 is equal to 1 plus R divided by 10. So here R is equal to 4.554. Okay. I want to ask you something. Are you getting these calculations? Yes or no? हे calculation कसे करायचे माहिती आहेत ना तुम्हाला सगळ्यांना? का सॉल्व करून देऊ जसं मी पहिल्यांदा देत होते तसं? बोला पटकन. डिवाइड होतं, मल्टिप्लाय होतं, मायनस, ऑल दिस थिंग्स, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस ना? Yes or no? Ganesh, are you getting this? Yes, ma'am. Okay. So next example is what is the EMI of a loan of 2,50,000? No, sorry, there is a 25,000 is repaid in a 4 years if the rate of interest is 5% per annum on the outstanding amount at the beginning of each year. So what it says, what is the EMI of a loan? 25,000 is repaid in a 4 year, 4 वर्षामध्ये if the rate of interest is 5% per annum on the outstanding amount of the beginning of each year. Okay, so total loan amount is 25,000 and years 12 into 4 is in 48 months. So rupees 520.83. 5% interest rate on 25,000 म्हणजे काय 5 into 25,000 divided by 100. So it become rupees 1,250. And how to pay in and for 1 month?
1 to 50 divided by 12. 12 for 1 year is equal to 1 year is equal to 12 months. So it become 104.517. So 520.83 plus 104.17 is equal to 625. So EMI of loan is rupees 625. So this one are the example in your book. So solve this example at all of you, and if you are in doubt, then ask me. Okay. So this type of examples are there. In all example, there is the same question as an find EMI. ओके. आता लक्षात घ्या, हे जे क्वेश्चंस आपण सॉल्व करतोय, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है. ओके. उससे पढ़कर उसमें अमाउंट क्या है, पी क्या है, एक्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एन क्या है, आई क्या है, ये सब आपको समझ में आने चाहिए. तो इसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला वहां यूज करना है वो भी खुद में खुद ही समझ में आ जाना चाहिए. ओके. सो फॉर दिस डू ऑल द एग्जाम्पल्स इन युअर बुक. ओके. बुक मधले सगळे एक्झाम्पल सॉल्व करा. आपल्याला कळलं पाहिजे काय काढायचंय EMI, त्याच्यामध्ये एन किती घ्यायचा आहे, एक्स कसा काउंट करायचा आहे, आय कसा काढायचा आहे. ओके. ऑल दिस थिंग्स. So this one is a topic of EMI. In a next lecture, we take interest. Sorry, not a interest. Interest and annuity. This one is finish here. Next lecture we take stock and shares. Okay. Stock and shares. When your exam is there, our there is a 70 marks exam, na? Yes, ma'am. Okay. So this I think 12. Correct, na? Yes, ma'am. So in this exam, out of 70 marks, syllabus is an up to, I think there is an 12 is a date, na, of the exam. Is in Saturday. Yes or no? Yes. Yes or no? Am I Yes. audible to all? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Sorry. Am I audible? No, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There is a 70 marks of paper is there. So in this paper there is an example to solve, and also there is one line MCQs are there, but ज्यादा जो रहेगा वो सॉल्विंग पर्पज का रहेगा, तो आपको उसका प्रिपरेशन करना होगा. हमारे सिलेबस में सिर्फ आप स्टॉक एंड शेयर इज एन रिमेनिंग, एंड आल्सो LPP and transportation problem is remaining. So we take this in the next lecture also. Stock and share. So syllabus up to the LPP, your syllabus. Okay. ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम्सला थोडासा वेळ लागेल, ते आपण घेऊया नंतर. ओके. सो दिस वन इज अ सिलेबस फॉर द एक्झाम. ओके. आउट ऑफ 7. Anyone have any query?
Yes, no. So I think no one has query. So leave the meeting, join the next lecture.